Live. Hello, good afternoon. Welcome back to our analysis session. It's a new week. We are inching closer towards the CLAT exam. It's 6 days away from the exam, and I hope you guys are on track with your preparation. With me in class, can I is in the chat? Need some response if you guys met break. I hope you all enjoyed festivity and some extras for and everything is going on track. Sue is here, Mishika is here, Kashish is here. Back to the class after a long hiatus, but yeah, here we are. Today is 4th of November, Monday, and I hope you all have set weekly goals. I hope you guys are using your revision on weak concepts. On that note, my voice is breaking for just give me a second, guys. Are we back? Am I audible, visible, clear to every some response? Is the voice better now? Is everything sorted? Can I get no in the chat box? Anyways, here am I audible, visible with my presentation? I'll try my okay. What about now? What about now? Do we have any improvement? Yeah, I know there was no audio. I was reconnecting to a different network. Am I audible now? Audible and visible now, guys? Yes? Everything sorted? Voice is loud and clear. Video is not lagging. Presentation is visible. Everything is sorted. Chalo, theek hai. Surprisingly, the office Wi-Fi is glitching and my personal hotspot is giving a better bandwidth. ठीक है, technology है, होता है, happens sometimes. Anyway, हम कहाँ पे थे? We were discussing that it's a new week and I hope you guys have set your goals for the week and you're emphasizing more on revision. And on that note, let's begin our Hindu analysis session. I have a couple of special announcements to make before we start today's analysis. And let's start with those announcements as well. So the first announcement is today at 8 p.m. I would be coming live along with our very talented and very knowledgeable Siddharth sir with a 30 days game plan, a revision strategy for all of you. So make sure you do not miss this session. It would happen live on the YT channel today, which is 4th of November at 8 p.m. Please make sure you tune in and make the most out of it. It would be a short and crisp session, just giving you a roadmap as to how to approach the next 25-26 days and make the most out of them. Okay. So that is one thing. Another thing which I have started for you guys, we have started for you guys, is a series, a new series which is coming up, which is Know Your NLUs. So the purpose of this series is to give you
a sneak peek into what life at NLUs looks like, what is the course curriculum, what is the fee structure, what is the placement statistics, what are the facilities available at these NLUs, what is the experience like at studying in these top colleges. So we'll cover all the NLUs in a chronological manner. I would not call it ranking wise, but okay, probably ranking wise. So we'll be starting with Nalsar Hyderabad because why not? Because I have a personal bias. I am from Nalsar, so we'll be starting the series with Nalsar, but we'll definitely cover NLS, NUJS, and whatever the remaining NLUs are, NLU Jodhpur, Gandhinagar, Patiala, Odisha, all of those NLUs, we'll be going into the depth of these. We might also invite some people to talk about their experiences in those particular colleges. I can talk about my experience from Nalsa, and it's gonna be a very fun and engaging video. It would be a recorded video sort of a session, but very value packed, very informative, and very fun to explore as well. So I am anticipating a huge response from all of you. Make sure that these videos go viral, make sure you watch them, make sure you send it to all your aspirant friends, everyone who's preparing, your parents, all of those things. Just do your thing. Okay, engagement वगैरह बढ़िया रहना चाहिए. First video is releasing live today at 10:30 p.m. 10:30 p.m. पे आपको channel पे मिल जाएगी first video, which is on Nalsa. Everything in and out about Nalsa would be on the channel. So that is the second special announcement. The first is the session at 8 p.m. This would be a live session. This would be a recorded video available for you at 10:30 p.m. on the channel, and subsequent videos would be coming in the next upcoming days, right? All right. With that being said, I hope everyone is excited with this series and with today's 8 p.m. session. And keeping up the excitement, let's begin today's Hindu analysis session. If all of you are ready, I would appreciate a ready in the chat box, and then we shall begin. Ready in the chat box, please. If everyone is ready. Good afternoon to everyone who has joined us. Raj, Nandini, Priya, Priyanshi, Aditya, Happy Person, and everyone else. सिम्बी वगैरह भी कर लेंगे. पहले एनएलयूज वाले कर लेते हैं, वायरल कर दो उनको. सिम्बी वगैरह भी कर लेंगे, सिम्बी कर लेंगे, जिंदल कर लेंगे, एंड जितने भी आपके अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो सारे कवर कर लेंगे. दैट्स नॉट एन इशू. ठीक है, बहुत सारे लॉ कॉलेजेस हैं, जो आप बोलोगे वो सारे कवर कर लेंगे. ठीक है, चलो लेट्स बिगिन आवर सेशन फॉर द डे. इट्स गोना बी अ शॉर्ट एंड क्रिस्प सेशन टुडे. आज वोकैबुलरी आपके लिए होमवर्क है. आज वोकैबुलरी मैंने इंक्लूड नहीं करी है सेशन में. इट्स गोना बी अ होमवर्क. ऑल ऑफ यू आर गोना टेल मी वन न्यू वर्ड व्हिच यू लर्न टुडे from the newspaper or from any other resource. Put them in the comment section after the stream ends. So that is a homework for you today. बिकॉज अब थोड़ा सा फाइनल गियर में गाड़ी डालने का टाइम आ गया. लास्ट के कुछ दिन रह गए, थोड़ा सा हसल मोड में आएंगे हम लोग. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन फॉर द डे. द फर्स्ट टॉपिक, चलो पहले न्यूज़पेपर ओवरव्यू ले लेते हैं, देन वील डिस्कस दीज 4 टॉपिक्स इन डिटेल. बट या, दीज आर द 4 टॉपिक्स वी गोना डिस्कस. फर्स्ट इज एन एडिटोरियल आर्टिकल ऑन इंडिया ईरान and what were the bilateral talks which happened in the context of the recently held BRICS summit. कहाँ पे हुई थी BRICS summit recently? जल्दी से मुझे chat box में बता दो. Tell me in the chat box. The recently held BRICS summit was held at which place? Need the exact name. Then there is another article on the Collegium system. This is in light with the retirement of the current CJI, Justice DYC, and the upcoming new CJI, which would be Justice Sanjeev Khanna. एंड क्योंकि लास्ट वीक है तो काफी सारे कलीजियम रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं एंड उसी से रिलेटेड आर्टिकल है. तो वील जस्ट क्विकली रिकैप ऑल ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू द कलीजियम सिस्टम, हाउ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, व्हाट वर द 3 जजमेंट्स. वील हैव अ क्विक रिफ्रेशर ऑन दैट. Then there is an interesting article. There's a report by WHO, which is the World TB report, and it has shared some very interesting insights about India and how India is tackling tuberculosis, TB. Then there is another editorial article which talks about Park Bay. Park Bay is essentially a small water body between India and Sri Lanka. I'll show it to you on the map as well. So Park Bay is a disputed region as of now in context of fishing rights. Fishermen from Tamil Nadu as well as fishermen from Sri Lanka claim their right on the Park Bay and they go for fishing. But a lot of Indian fishermen were recently arrested by Sri Lanka and then we had to get them out. So that is a controversy we'll be looking at. Special announcement we have already made. So make sure that you are here on the channel at 8 p.m. as well as 10:30 p.m. ठीक है, रिमाइंडर्स वगैरह सेट कर लो अपने.
And chalo, let's move to the newspaper. We'll have an overview of the newspaper and then we'll discuss these four topics in a little more depth. Okay, chalo, theek hai. So that is the newspaper for the day. First headline news is a very tragic one. 12 injured in a grenade attack at Srinagar market. तो recently terror activities J&K sector में काफी ज़्यादा बढ़ गई हैं. In the past couple of months, we have seen multiple attacks in Jammu and Kashmir, and this was one of them. Market में grenade explode हो गया. Luckily, no one lost their life, but 12 people were injured, and government is taking action. With just 2 days to polls, dead heat continues in the US. Which polls? The US presidential elections are just 2 days away now, and इनका जो competition है वो बहुत ज़्यादा neck to neck चल रहा है कमला हैरिस and Donald Trump का. Who do you guys think would win this particular election? I'm not asking who are you supporting. I'm just asking what is your speculation as to who would be winning the elections, the US elections this time. Is it gonna be Kamala Harris or is it gonna be Donald Trump? Please let me know in the chat box. The next article is Delhi's air quality dips further, likely to persist till Wednesday. Though this was quite anticipated, we have discussed stubble burning quite a few number of times now, and then of course, Diwali was a top up, and as a result, the AQI has taken a nosedive, and we are now in the very poor category. And I can feel that being in Delhi, but yeah, it is what it is. Let's hope it does not dip into the severe category. देखते हैं. Bank workers seek steps to address staff shortage. Not important. Okay, this is the Yamuna River being cleaned for the upcoming Chhat Puja. I think Chhat is on 7th or 8th this month. So cleaning process चल रहा है उसका. BJP promises UCC in manifesto for Jharkhand. Tribal people will be kept out of its ambit, says Amit Shah. So what is UCC? UCC is simply your Uniform Civil Code. That is, one law would be applied to everyone. And tribals would be kept out because उनका culture and उनका जो है traditions थोड़ा different है from other people. And of course, you all know Jharkhand is dominated by tribal population. So उस वजह से सबको खुश करने के लिए this is probably a move. UCC Indian Constitution में किस article में mentioned है? I want you guys to tell me in the chat box. UCC is mentioned in which article in the Indian Constitution? Can you guys tell me in the chat box, please? Okay, we have responses. Kazan, Russia is the correct answer. Priyanshi is saying Indian Express भी review कर लो. अब देखो last phase में हम आ गए preparation के, so it's better if we stick with one newspaper. अगर कुछ ऐसा striking होगा जो हिंदू में cover नहीं हुआ है exam के लिए बहुत ज़्यादा important है, तो I'll try कि मैं उसको भी cover करूँ. ठीक है? But we'll stick to Hindu for the time being. Difficult to say. Donald Trump काफी सारे लोगों ने बोला है. Kamala Harris भी 2-3 लोगों ने बोला है. Article 44 is the correct response. Priyanshi is saying if Trump wins, we can see quite a flip in the situation. Mishika is saying conservatives lost the women vote with the Dobbs decision, so Harris maybe. Let's see. Power competition है अभी तो. Neck to neck चल रहा है. It's hard to predict, but we'll see who wins and what are the implications. We'll discuss that in detail, of course. Okay, let's come back. This is an article which we'll discuss in detail. Mixed bag for a Supreme Court Collegium in judicial appointments. We all know what is a Collegium. We'll dive a little deeper into the history and context of the Collegium system. Then we have government to seek LGs not for regularization of former bus. Okay, this is not important. This is city-based news. We can skip this. Bandhavgarh elephant deaths, 2 forest officials suspended. Okay. Farm fires cross 4,000 mark in Punjab, air quality poor. We've discussed that. Telangana caste survey. Okay, all of this is not important for us. What is this? Breaking the cycle. How to reduce burden of entrance exams on students. Oh my God. Please, if you guys are interested in understanding how to reduce the burden of entrance exams on yourself, go through this article. Okay. Then we have state news again. Center's dream of a third language in Tamil Nadu won't come true, says TVK, who is Tamilaga Vetri Kazavagam. ये political leader है वहाँ के एक. गाजियाबाद कोर्टरूम क्लैश ये हमने डिस्कस किया था. लड़ाई हो गई थी लॉयर्स की एंड पुलिस की इन गाजियाबाद. तो आज स्ट्राइक है दिल्ली के लॉयर्स की. इंटरेस्टिंग चलता रहता है कुछ ना कुछ यहाँ. Campaigning for bipoles. This is not important. Okay, India will win all assembly seats going for bipoles in UP, says Keshav Prasad Maurya. UP के डिप्टी CM है ये. Tejashwi Yadav say take spot shots. अरे वाह.
Kashmiri women sail past social financial constraint in pursuit of boat racing dreams. So this is something interesting. A new boat racing is happening on the Dal Lake in Srinagar, and this lady is Bilkis Mir, who's called Kashmir's Aqua Queen. She also participated in the Paris Paralympics. But yeah, nothing that striking from a competitive perspective here. Priyanka to meet Modi. This is politics. Assam Meghalaya villagers join hands against sand mining. Not important. Kannada film director Guru Prasad found dead. Okay. Sad. Rest in peace. Corruption charges against DMK government will be probed after. Okay. Politics. This is interesting. K Rail. This is a high-speed rail project, and they have given it a green signal in Kerala. K Rail basically is designed for Kerala. So यहाँ पे एक नया project start हुआ है. This is on the lines of Vande Bharat. So, similar type का initiative है K Rail. So याद रखना K Rail is associated with Kerala. That's all you need to know as of now. बहुत ज्यादा इसकी डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है. रेलवे मिनिस्टर आपको पता होने चाहिए कौन है. हमारे फोटो में भी हैं वो अश्विनी वैष्णव जी. ठीक है. तो इन्होंने ये फ्लैग ऑफ किया कहाँ से? थ्रिसूर स्टेशन इन केरला. मिनिस्टर सुरेश गोपी बुक फॉर मिसयूजिंग एम्बुलेंस. अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो ये मिनिस्टर साहब ने क्या किया कि इनको जल्दी पहुंचना था एक मीटिंग में. सो इन्होंने एम्बुलेंस बुला ली और एम्बुलेंस में बैठ के चले, बिकॉज एम्बुलेंस हैज द राइट ऑफ पैसेज एंड एम्बुलेंस कैन ड्राइव rashly and can jump red lights and all of those due privileges rightly so are given to an ambulance to save lives. But मिनिस्टर साहब को कुछ बढ़िया ही आइडिया आया. तो सही है, इंटरेस्टिंग है ये भी. फिर अब he has been charged under Motor Vehicles Act and BNS, but obviously कुछ होगा नहीं, हम सबको पता है. Residents of AP villages stage protest to assess uranium availability. Okay, interesting. MP responds in Malayalam to minister's Hindi replies. अरे यार ये तो क्या ही बोला जाए इस पे. Airports where pilots could fear to land. This is in light with a news which came in October 25. यहाँ पे mentioned है कि Qatar Airways का एक plane land कर रहा था दोहा में, and वहाँ पे when the plane had left, the plane had made the landing and was going towards the area where it is parked, and then suddenly the land below collapsed and the plane like nosedived there. But no one lost their life. But yeah, this exposed the infrastructure reliability of that particular airport. It could not take that much load. So उसी के अराउंड ये आर्टिकल है. उतना ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे. This is festive season GST receipts hold a critical signal for growth. This is also not important for us. This is important for us. The BRICS summit boost to India-Iran ties. We'll discuss this in detail. What is the BRICS summit and what are the implications of India-Iran ties? What happened in the BRICS summit? This is the Pak Strait, the Pak Bay wala article. Sharing resources. Fishermen from both sides of the Pak Bay must meet to resolve dispute. So we'll discuss that in detail. What parties get wrong about agriculture is not important for us. Freedom for freebies is not important for us. This is politics related. Assessing India's TB burden. This is important. This is the Global Tuberculosis Report, as I was telling you, by WHO. So we'll take a look at some stats and have a quick, deep dive into this. ट्रिपल वीटो किल्स मूव टू एक्सपेल साउथ अफ्रीका फ्रॉम यूएन. तो यूएन को जो है अफ्रो एशियन कंट्रीज काफी सारी मिलके साउथ अफ्रीका को यूएन से एक्सपेल कराना चाह रही थी, बट ट्रिपल वीटो मार दिया. किन 3 कंट्रीज ने? कैन यू गाइस टेल मी द नेम्स? वन वाज फ्रांस, वन वाज यूएस, वन वाज यूके. ठीक है, तो उधर वाली 3 कंट्रीज. यहाँ से किसने सपोर्ट किया था? चाइना और रशिया ने आई थिंक सपोर्ट किया था, लिखा होगा यहाँ पे. बट 3 कंट्रीज ने वीटो कर दिया. एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम इन 29 years ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की हिस्ट्री की 3 कंट्रीज ने वीटो किया है किसी पर्टिकुलर चीज पे. सो दिस इज इंटरेस्टिंग. इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना आप लोग. Make sure you are well versed with this. On the new coastal zone plan of Kerala, this is not important for us. State-based news hai ye. What are major challenges faced by Indian cities? This is in light with World Cities Day, but again, competitive exam perspective, so this is not that important. वर्ल्ड सिटीज डे आपको पता होना चाहिए. एज अ वन लाइनर अक्टूबर 31 को सेलिब्रेट किया जाता है. इस साल की थीम है यूथ क्लाइमेट चेंज मेकर्स कैटलाइजिंग लोकल एक्शन फॉर अर्बन स्टेबिलिटी. दिस इज द थीम. This is the day, October 31. That's all you need to know for now with regards to World Cities Day. All right, chalo.
साइबर स्कैम्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, सो वी वांट टू बी टेकिंग दिस अप अगेन. India is losing a lot of money to cyber scams. We have discussed this article couple of times. India and China made some progress in disengagement. ये बोला हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ने. कहाँ पे बोला ये इन्होंने बोला एक कॉन्फ्रेंस में जो ये एड्रेस कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस कर रहे थे. एंड वहाँ पे इन्होंने बोला कि काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई है डिसएंगेजमेंट में, दोनों तरफ से जो है डिप्लोमेसी रीस्टैब्लिश हो रही है. ED files charge sheet in digital arrest cases, 14C issues advisory. Okay, not important. It plans to upgrade Sukhoi 30 jets. Indian Air Force focusing on AI-based solutions. So that is the news. Like, there's nothing to go deeper into this. Ex-journalist from Gaza, new Palestine embassy charged the affairs. Okay. Then this is again state-based news. Tamil Nadu train accident, case of negligent driving. This is interesting. First science result from Aditya L1. ISRO's Sun mission is out. So this is in context with visible emission line coronagraph, which is mounted on the Aditya L1 spacecraft, and it has started sending us results. So yeah, this is a new achievement that science results are coming from the Aditya L1 mission. Emirati night with Emperor of Music, यहाँ बात करी गई है AR रहमान की. इन्होंने कॉन्सर्ट किया था ये वहाँ पे अबू धाबी में. काफी पढ़ रहा था मैं, काफी सारे गाने गाए इन्होंने, बढ़िया था कॉन्सर्ट. फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट इन न्यू दिल्ली फ्रॉम टुमारो. दिस इज सॉर्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एज अ वन लाइनर. सो वेयर वाज द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट हेल्ड? इन न्यू दिल्ली. दैट्स इट. ठीक है. अब इसमें फिर वही बताया था कि what is the purpose of this. It will bring together Buddhist Sangh leaders, scholars, experts. Buddhism holds a unique position in spiritual and cultural history of India and Pan-Asia. Can you guys quickly tell me where was Gautam Buddha born? Where did he achieve enlightenment? And where did he, spend his last days or passed away? 3 things, 3 places. I need them in the chat box. अब क्योंकि देखो बुद्धिज्म से रिलेटेड एक न्यूज आ गई है, तो बुद्धिज्म का बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट आपको पता होना चाहिए. इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी काफी ज्यादा बायलैटरल एग्रीमेंट्स, एंड देयर इज द ब्रिक समिट, देयर इज द SCO समिट, देयर इज द आसियान समिट. उन सब में ये बुद्धिज्म वाला एंगल हमने एक्सप्लोर किया था. तो बुद्धिज्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आर शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स. Where was Gautam Buddha born? Where did he achieve enlightenment? And where did he pass away? Travel insurance is not important for us. Important for people who are traveling, but not important for us from a competitive perspective. Pakistan shuts primary school in Lahore. Pollution बढ़ गया है वहाँ पे. 1000 हो गई है उनकी AQI, सरप्राइजिंगली एक्सीड कर गई है 1000 को. काफी क्रेजी हो गया है. हाँ ठीक है, चलो. At least 31 killed in Israeli bombardment of Gaza Strip. This is everyday news now. I mean, it's sad, but it's everyday news now. Trump Harris focus on blue wall states in final hours of US election campaign. This is not important. US bomber takes part in joint air drill with South Korea and Japan. Okay, India involved नहीं है तो ये हमारे लिए important नहीं है. But India ने recently, अभी बहुत recently एक exercise करी है Vajra Prahar करके. Can you guys tell me, Vajra Prahar was an exercise which India did with which other country? Tell me the name in the chat box, please, very quickly. Vajra Prahar भी करी है हमने गरुड़ शक्ति भी करी है. Yes, गरुड़ शक्ति किसके साथ करते हैं हम, और वज्र प्रहार किसके साथ करते हैं हम? प्लीज मुझे बताएं चैट बॉक्स में जल्दी से. That would tell me if you guys are studying GK every day or not, because these are recent news. Bangladesh was to strip out fascism from its constitution. Okay, ठीक है. Clinical Kiwis conquer India script history with series sweep. तो 90 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बाहर से कोई कंट्री आई है और उसने इंडिया को व्हाइट वॉश कर दिया है एक टेस्ट सीरीज में 3-0. 3 से ज्यादा मैचेस, 3 या 3 से ज्यादा मैचेस की टेस्ट सीरीज में इंडिया पहली बार होम ग्राउंड पे आ रही है 3-0 से. So that is kind of disappointing and sad. I personally, as a cricket fan, I'm quite disappointed. But yeah, it is what it is. It's a game that happens. Rohit is saying, I take full responsibility for series whitewash. Don't know how the punt decision was. This is not important for us. This was not important, not important, not important. Not important, not important.
Yeah. So yeah, that's the newspaper, guys. That's all we need to do from today's newspaper. Let me look at some responses in the chat box before we proceed. सूर्य ने सेइंग आप भी बोल दीजिए कौन जीतेगा. मुझे लगता है ट्रम्प जीतेगा. आई एम हैविंग सच अ गट कॉल कि मुझे लग रहा है कि शायद ट्रम्प जीत जाए, बट आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग. विल गेट टू नो वेरी सून. Okay, so Bodh Gaya is enlightenment, that's correct. Lumbini is the birthplace, also correct. And Kushinagar is the place where he passed away. Dhriti has given me all the three responses. Raj Nandini has given me two responses. Nandini has given me responses in two parts, two of the questions. यूएस के साथ हमने करी है वज्र प्रहार, एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड गरुड़ शक्ति हमने करी है इंडोनेशिया के साथ. गुड जॉब, वेल डन गाइस. पीपल हु आंसर्ड करेक्टली, good going. People who did not, time to amp up your GK preparation. चलो वापस आते हैं हम अपने एनालिसिस पे. लेट्स क्विकली डिस्कस दीज टॉपिक्स इन लिटिल मोर डिटेल, ऑल्दो वी हैव ब्रीफली टच्ड अपॉन देम. लेट्स टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड ईरान. तो जब आप मैप देखते हो, व्हेन यू सी द वर्ल्ड मैप, ईरान इज प्रीटी क्लोज टू इंडिया. ईरान हिस्टोरिकली देखो तो इंडिया का नेबर भी था व्हेन पाकिस्तान वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया. We shared boundaries with Iran, and we also share a lot of cultural ties with Iran because we have discussed this before. Iran is dominated by Shia Muslims, and after Iran, the highest number of population of Shia Muslims are found in our country, India. So that is that cultural religious link as well. Iran has been a very big contributor of crude oil trade to India. India used to import a lot of crude oil from Iran. Still does to a certain extent, but अब बहुत ज़्यादा कम हो गया after the US sanctions. US has placed sanctions on Iran. Why did US place sanctions on Iran? Can you guys tell me the context? I have told this to you multiple times. All of you should know this by now. ईरान पे sanctions क्यों लगे थे US से? क्या थी वो वजह? क्या था वो कारण? क्या था वो रीजन? जल्दी से मुझे बताएं चैट बॉक्स में. तो हम बात कर रहे हैं ईरान की, ठीक है. तो ईरान में हमने एक पोर्ट भी एस्टैब्लिश किया है जिसको इंडिया वुड बी मैनेजिंग, इंडिया वुड बी यूजिंग फॉर ट्रेड. कैन यू गाइस क्विकली टेल मी द नेम ऑफ दैट पोर्ट इन द चैट बॉक्स? उसका काउंटर पार्ट चाइना पाकिस्तान में बना रहा है, विच इज कॉल्ड ग्वादर पोर्ट. एंड ग्वादर पोर्ट के पास में ही एक और पोर्ट है जो इंडिया डेवलप कर रहा है ईरान में, सो दैट वी गेट एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया. एंड वी ऑल्सो हैव एन ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट. जो नॉर्मल ट्रेड रूट है जो उधर मेडिटेरेनियन सी और उस तरफ से होके जाता है, इजिप्ट के पास से होके जाता है, उसका एक ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट बन जाएगा हमारा दूसरा वाला पोर्ट, जिसका नाम क्या है? क्या चैट बॉक्स में आ गया है नाम? चाबहार पोर्ट इज द नाम, एब्सोल्युटली करेक्ट. Iran supports Houthis and other terrorist groups which USA is not happy about. हाँ, that is true, but sanctions उस वजह से नहीं लगे थे ना. sanctions क्यों लगे थे? Why were trade sanctions imposed on Iran by the US? पुरानी कहानी है ये, 2014-15 की कहानी है. डिस्कस किया है हमने ये. हाँ, चाबहार में जो टर्मिनल है उसका नाम है शायद बहेस्ती टर्मिनल. मैंने मेंटी क्विज में क्वेश्चन पूछा था एंड आई एम ग्लैड यू गाइस रिमेंबर द एंटायर डिटेल. यस, न्यूक्लियर डील, न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था भाई ईरान, एंड यूएस कहाँ चाहता है कि कोई और न्यूक्लियर पावर बन जाए. एब्सोल्युटली करेक्ट. न्यूक्लियर टेस्ट जब कर रहा था ईरान तो उस पर यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे, ट्रेड सैंक्शंस. ठीक है जी. तो हम बात कर रहे हैं इंडिया और ईरान के रिलेशनशिप की. तो ये कॉन्टेक्स्ट में कैसे आया? कॉन्टेक्स्ट में ऐसे आया क्योंकि हम अभी मोदी जी पहली बार ईरान के नए प्रेसिडेंट से मिले हैं. कहाँ पे? ब्रिक्स समिट में. ब्रिक्स समिट कहाँ हुई थी? रशिया में. रशिया में कहाँ पे? कजान में. कौन सी डेट को? 22 से 24 अक्टूबर को. ये सब हमको पता है. तो बायलेटरल एंगेजमेंट हमारा वहाँ पे हुआ ईरान के साथ. हमने काफ़ी सारी बातें करी. प्लीज़ मुझे प्रेसिडेंट का नाम बता दीजिए. ईरान के प्रेसिडेंट का क्या नाम है जो न्यूली अपॉइंटेड है, जिनके साथ मोदी जी ने वार्तालाप करी है? हाँ, तो ईरान हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एससीओ. ईरान इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एससीओ. वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ ब्रिक्स. ईरान हैज रिसेंटली जॉइंड ब्रिक्स along with 4 other countries. So yeah, from a geopolitical perspective, from a cultural perspective, from a trade perspective, from a trading route perspective, and from a perspective of staying balanced and not opposing US and not opposing, sorry, China, Russia, and all of those counterparts, we need to have a good diplomacy with Iran as well, which we do have. And Iran is also banking upon us to, strike a mediation, strike a peace deal with the conflict which is going on between Iran and Israel. So ऐसा क्यों? क्योंकि India is in the good books of both the parties. India is close to Israel as well as close to Iran. ईरान और इसराइल का तो आपको पता ही है क्या चल रहा है. ईरान की और भी
अरब कंट्रीज से नहीं बनती, क्यों? बिकॉज ऑफ द शिया सुन्नी वाला कॉन्फ्लिक्ट। ईरान इज शिया डोमिनेटेड एंड अदर मुस्लिम कंट्रीज आर सुन्नी डोमिनेटेड। प्राइमरली सऊदी अरेबिया से इनका कॉन्फ्लिक्ट रहता है ज़्यादा, because Saudi Arabia is the hub of Sunni Muslims. It's the center from where the religious control happens primarily. तो वो चीज़ भी है, बट उनमें भी काफ़ी अब जो है डिस्टेंसेस थे वो कम हो गए हैं, ऑल थैंक्स टू चाइना एंड इट्स डिप्लोमेसी. They have brought both the parties on a table and they have reduced their differences. But yeah, Chabahar port is very important for India's perspective, and not just Chabahar port. Iran also comes to be a part of the international north-south transport corridor, जो ईरान से होके जाता है. Be it the international north-south transport corridor, be it the IMEC route, ये दोनों ईरान से होके जाते हैं. उस वजह से ईरान becomes really not powerful, important for us फ्रॉम अ ट्रेड रूट परस्पेक्टिव, क्योंकि पाकिस्तान में चाइना ग्वादर पोर्ट तो बना ही रहा है, तो वहां से तो हम नहीं जा सकते ऑब्वियसली. तो इसलिए चाबार हमारे काम आएगा. चाबार का लिए हमने 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो आई थिंक सबको पता ही है यहाँ पे कि वी आर गोइंग टू मैनेज दैट. ईरान की अगर हम ऑयल कैपेसिटी की बात करें तो ईरान इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ ट्रेड पार्टनर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, बिकॉज बहुत सारा ऑयल है ईरान के पास. पूरे वर्ल्ड रिजर्व्स का 12% ईरान के पास है, एंड वो जो मिडिल ईस्ट वाला रीजन है उसका अप्रोक्सीमेटली 25-26%, 24% आर्टिकल कहता है. 24% ऑफ द रिजर्व्स ऑफ वेस्ट एशिया लाई इन ईरान, एंड 12% ऑफ द वर्ल्ड रिजर्व्स ऑफ क्रूड ऑयल लाई इन ईरान. एंड ये लोग जो है इनके पास 209 बिलियन बैरल्स के ऑयल रिजर्व्स हैं, एंड नेचुरल गैस है इनके पास 33,000 समथिंग बिलियन क्यूबिक मीटर्स, विच इज अ लॉट. And this is data from 2021, तो अब थोड़ा सा कम होगा, but still they are producing 3.4 million barrels per day of crude oil and exporting it, which is a lot. So yeah, इसी वजह से ईरान हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है गल्फ रीजन में, एंड यही ये आर्टिकल आपको बताता है. ये आर्टिकल ये भी बताता है कि वी आर ऑल्सो डेवलपिंग अ रेलवे लिंक, जहाँ पे हम तो नहीं बना रहे, बट हाँ चाबहार और अफगानिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान में एक सिटी है विच इज कॉल्ड जहेदान. I'll write it down. चाबहार, जाहेदान, तो इनके बीच में एक रेल लिंक बन रहा है विच कैन पॉसिबली ऑल्सो कनेक्ट इंडिया थ्रू अ रेल रूट, सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी फॉर अस. एनर्जी सप्लाईज भी इस तरफ से जा सकती है, फिर लैंड रूट से जा सकती है. तो वो सारी चीज़ें भी हैं, वो सारी चीज़ों की वजह से भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. दैट इज व्हाट द आर्टिकल टेल्स यू अबाउट. यू गाइस कैन गो बैक एंड रीड द आर्टिकल for more details, but yeah, we have covered the gist of the article and most of the details in the article. With that being said, let's move on to our next topic, which is, I believe, related to Masood Pezeshkian is the right answer. Absolutely correct. President का नाम मसूद पेजेश्किन है, सही जवाब. हम चलते हैं अपने next article पे, which is mixed bag for Supreme Court Collegium in judicial appointments. अब Collegium आप सबको पता है, Collegium is a group of judges which is responsible for selecting judges and their appointment in the High Court and Supreme Court of India. तो ये प्रोसेस जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कॉलेजियम किस आर्टिकल में मेंशन्ड है? Which article of Indian Constitution mentions the collegium system? Can you guys tell me in the chat box? Chat box में बताएं जल्दी से. Which article of Constitution has collegium system? Yeah, most of you got it. No article talks about collegium system. हर बार कोई ना कोई फंस जाता है इस ट्रैप क्वेश्चन में. इस बार देवांश फंस गया है. 79 नहीं यार, collegium का कोई मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में. Collegium is a thing which was innovated by the Indian judiciary, and this came through the 3 different judges case, which we called the first judges case, the second judges case, and the third judges case. उसके बाद फिर NJAC भी आया था. कहानी बताऊं आपको फिर से पूरी, या आप लोगों को याद है पूरी कहानी? फर्स्ट जजेस केस किस ईयर में आया था? कैन यू गाइस टेल मी इन द चैट बॉक्स वेरी क्विकली? यस, द सेकंड जजेस केस ब्रॉट आउट द कॉलेजियम टू बी स्पेसिफिक, बट उसकी शुरुआत होती है फर्स्ट जजेस केस से, जहाँ पर डिस्कस किया गया था कि जो कंसल्टेशन है वो कंसल्टेशन ही है या वो कॉन्करेंस है.
whether they have to consult, whether the president has to consult the judges, the CJI specifically, or they have to, have a concurring opinion, have the same opinion. याद है, कहानी याद है सबको पूरी की पूरी? फर्स्ट जजेस केस एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसके बाद एओआर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सेकंड जजेस केस जिसमें कलीजियम आपका एस्टैब्लिश हो गया था। एंड उस टाइम कलीजियम में 5 लोग नहीं हुआ करते थे, उस टाइम 3 लोग हुआ करते थे, चीफ जस्टिस एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस। उसके बाद फिर थर्ड जजेस केस आया जिससे कलीजियम एक्सपैंड होकर 5 जजेस का हो गया, सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस। कंसल्टेंसी ऑफ प्लुरलिटी ऑफ जजेस बिकेम इंपॉर्टेंट। थर्ड जजेस केस आया था 1998 में, सेकंड जजेस केस आया था 1993 में, सुप्रीम कोर्ट एओआर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फर्स्ट केस एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आया था 1981 में। ठीक है, तो ये थी पूरी कहानी। अब इसके बाद कलीजियम सिस्टम का क्रिटिसिज्म भी आपको पता ही है, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, जुडिशियल वैकेंसीज बहुत सारी पेंडिंग हैं जो फिल नहीं हो पा रही हैं, नेपोटिज्म के चार्जेस हैं, फेवरेटिज्म के चार्जेस हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, एक्सेसिव पावर मिल जाती है कलीजियम को, रिप्रेजेंटेशन यूनिफॉर्म नहीं है, people from backward caste and backward tribes, scheduled tribes do not find representation, a lot of representation. Women do not find a lot of representation. People from the LGBTQIA plus community do not find representation in the top courts as judges, high courts and supreme courts. तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है कि अब ये जो लास्ट वीक रह गया जस्टिस डीवाईसी का, उसमें ही ट्राइंग कि डाइवर्सिटी थोड़ी बढ़ जाए सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट जजेस की। ही द कलेजियम आल्सो forwarded the name of one of the judges who is an openly gay judge. Can you guys tell me the name? किसी ने आर्टिकल पता है, पढ़ा है किसी ने? He's an advocate who is openly gay, and his name was recommended as the judge of Delhi High Court, but अभी गवर्नमेंट ने उसको अप्रूवल नहीं दिया है उस डिसीजन को। Does anyone know the name of the advocate? Saurabh Kirpal. Saurabh Kirpal is the name of the advocate, and that has been recommended. But वही है कि although they on theory talk a lot about diversification, representation, but in actuality, if you see, there are very few women judges in the Supreme Court or in the high courts. तो फिर LGBTQ तो चलो बहुत बाद की बात है, विमेन जजेस तो आ जाए, पहले दूसरे कास्ट के जजेस तो आ जाए, दूसरे सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स के जजेस तो आ जाए, दैट वुड बी द फर्स्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। बट या धीरे धीरे होंगे चेंजेस, एटलीस्ट अब बात होने लगी है इस चीज की, तो प्रोबेबली चेंजेस भी हो जाएंगे। यस, एडवोकेट किरपाल इज द राइट आंसर, सौरभ किरपाल। देखते हैं वो जज बनते हैं कि नहीं बनते, अगर बनेंगे तो वो भी एक लैंडमार्क चीज होगी अपने आप में। ठीक है, तो और क्या बात करनी थी हमें इस बारे में? एनजैक आप सबको पता ही है, एनजैक जो सिस्टम आया था थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 99th, आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एनजैक वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर? क्विकली टेल मी द ईयर इन द चैट बॉक्स। फिर उसके अगले ही साल सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड नल एंड वॉइड घोषित कर दिया, saying that it violates the constitution, independence of judiciary violate हो रही है इससे। Which year did NJAC was formed through the 99th Constitutional Amendment Act? I need the year. 2014 is the correct answer. 2014 is the absolutely correct answer. Good job, Nishika. सबको याद होना चाहिए यार, ये तो बेसिक चीजें, ये तो याद होनी चाहिए। स्ट्रेंथ क्या है जजेस की? व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस एज ऑफ नाउ? हाउ मेनी सुप्रीम कोर्ट जजेस आर सिटिंग एज ऑफ नाउ? मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है, नबी स्ट्रेंथ क्या है? Responses in the chat box, please. And then we move on to the next article. 33 out of 34. नहीं, 34 ही है अभी स्ट्रेंथ। From the sources I checked, it's 34, 33 plus 1. 34 maximum strength है, and अभी 34 ही है। 33 are Supreme Court judges and 1 is the CJI. ठीक है, तो 34 full strength ही चल रही है। चलो ठीक है, let's move on to the next article, which is assessing India's TB burden. So TB is, as most of us know, infection, a disease which is caused by what? A virus, a bacteria, a protozoa. Can you guys tell me?
in the chat box. TB is caused by what? एंड अगर उस स्पीशीज का नाम पता है आपको, ऑर्गेनिज्म का जिससे होता है टीबी, तो दैट इज जस्ट ब्यूटीफुल. क्योंकि काफी बातों में रहा है, काफी डिस्कशन में रहा है टीबी रिसेंटली. दिस हैज बीन इन न्यूज फॉर क्वाइट अ वाइल नाउ. दिस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू पिक अप. हम बात कर रहे हैं in context of the global tuberculosis report of 2024, which has highlighted that India has the highest burden of TB in 2023. 2023 का डेटा हमें प्रेजेंट किया गया, जिसमें बताया गया है कि आधे केसेस, even more than half, 56% approximately, 55.9 to be precise, were concentrated in just 5 countries, and India accounts for 26% of the cases worldwide. यानी कि हर चौथा केस ऑफ टीबी इज इन इंडिया, फॉलोड बाय इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपींस एंड पाकिस्तान, जहाँ पे 10%, 6% के आसपास है. But India has a major chunk, which is 26%, quite a big number, and a lot of people lose their lives to TB every year in India and across the globe. 26% TB cases के लिए भी हम responsible हैं, 26% TB related deaths के लिए भी India ही responsible है. Although number of deaths are reducing as compared to historical data. Data ये कहता है इस आर्टिकल में कि 2010 में 5.8 lakh people died, but 2023 में 3.2 lakh people died. But still, it's not growing as in not declining at the pace which we ideally are targeting. What is India's target to eliminate TB from the country? कौन से ईयर का टारगेट रखा है हमने? You guys know the year? What is our goal to eliminate tuberculosis from India? Mycobacterium tuberculosis is the correct answer. It's caused by a bacteria. That is correct. 2025 is the correct answer. 2050 नहीं है धृति. 2025 तक we are aiming कि हम TB को eliminate कर देंगे इंडिया से. That is an ambitious goal, but let's see if we are able to fulfill that or not. अभी तो it seems like a distant reality. टीबी के बारे में अगर हम बात करें तो इट्स मोस्टली स्प्रेड्स थ्रू द एयर. इट्स एयरबॉर्न डिजीज, एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, कम्युनिकेबल डिजीज है, can spread through contact, and densely populated areas में ज़्यादा होता है. This usually affects the lungs, but in some cases brain को, spine को, intestines को भी affect करता है, but primarily it affects the lining of your lungs and lymph nodes को भी affect करता है. So yeah, that is all you need to know about TB. Numbers वगैरह आपको उतने याद करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, WHO ने रिलीज करी है ये रिपोर्ट, एंड इंडिया होल्ड्स 26% शेयर ऑफ केसेस एंड ऑफ डेथ्स, एंड कौन सा इसका बैक्टीरिया है ये सब आपको पता होना चाहिए. इससे ज़्यादा डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है. एक और चीज़ जो ये आर्टिकल एड्रेस करता है कि इंडिया में इतने सारे केसेस इसलिए भी है बिकॉज लॉट ऑफ अस हैव बिकम ड्रग रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, जो इंडियंस को हो रहा है बिकॉज वी कंज्यूम अ लॉट ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स. तो उस वजह से एंटीबॉडीज बन जाती हैं, एंड उस वजह से फिर जब आप टीबी की दवाई लेते हो तो वो वर्क नहीं करती, क्योंकि उस दवाई के अगेंस्ट ऑलरेडी आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बना चुकी है. सो अगेन, अवॉइड एंटीबायोटिक्स and antimicrobial drugs as much as possible to avoid such situations. ठीक है, but yeah, this is all the article is about. drugs अगर आपसे पूछे जाए टीबी के लिए कौन से दिए जाते हैं, तो आइसोनियाजाइड करके एक दिया जाता है, राइफेम्पिसिन करके दिया जाता है, डेलामिनाइड करके दिया जाता है, बट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज्यादा डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है फॉर योर क्लैट एग्जाम. ठीक है, so that is the article for you guys. Let's talk about the last article of the day, which is fishermen from both sides of Park Bay must meet to resolve dispute. Park Bay कहाँ पे है? देखो, please once again pardon my poor drawing skills. But this is how India's southern region looks like. There's a protrusion in this side if you would have observed the map closely. And यहीं से मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर श्रीलंका का है. थोड़ा सा मोटा बन गया श्रीलंका, बट ठीक है. सो दिस रीजन इज कॉल्ड योर पार्क स्ट्रेट, एंड उसका जो बे है उसको पार्क बे बोलते हैं हम ऑब्वियसली. एंड वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट और कंट्रोवर्सी जो है बनी हुई है कि किसके फिशिंग राइट्स वहाँ पे रहेंगे, हु वुड बी एंटाइटल्ड टू फिशिंग एंड द प्रोड्यूस ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन. एंड उस वजह से श्रीलंका के फिशरमैन और इंडिया के फिशरमैन में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं. श्रीलंकन गवर्नमेंट काफी बार अरेस्ट कर लेती है तमिलनाडु के फिशरमैन को,
एंड उस वजह से दिस इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग एंड अभी रिसेंटली बहुत सारे अरेस्ट हुए थे, फिर हमने तमिलनाडु के सीएम ने जो है छुड़वाया था हम लोगों को। तो यही है कि हमें मिलजुल के भाई एक बाउंड्री सेट कर लेनी चाहिए कि भाई यहाँ तक जो है फिशिंग राइट्स आपकी हैं, यहाँ से आगे फिशिंग राइट्स हमारी हैं इन द पार्क बे, एंड वी नीड टू रिजॉल्व दिस इशू एमिकेबली एंड इन अ मैनर विच इज म्यूचुअली बेनिफिशियल टू ऑल द स्टेक होल्डर्स। 2010 से ये कंट्रोवर्सी चली आ रही है कि उन कॉन्टोर्स में कौन फिशिंग करेगा, एंड या दैट इज व्हाट द न्यूज़ है। उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने का नहीं है, यू जस्ट नीड टू नो कि पार्क स्ट्रेट एंड पार्क बे कहाँ पे है। ठीक है, so yeah, that's all for the Hindu analysis for today's day. I hope this was a productive session. Please make sure that you stay consistent with your GK preparation, and please make sure that you join this session today at 8 p.m., which would be a revision roadmap strategy session for the last 30 to nahi bache, 26 25 days for CLAT. Make sure you don't miss it, and of course don't miss this series. This is going to be really special at 10:30 p.m. by yours truly. Subsequently would be coming for all the colleges as well. Vocab is your homework for the day. You need to tell me one new word which you learned from today's newspaper and tell me in the comment section after this live stream ends. एंड आई सी यू ऑल टुमारो इन द मेंटी क्विज। कल के मेंटी क्विज का टॉपिक भी जान लो। कल के मेंटी क्विज में हम सितंबर एंड अक्टूबर के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। It would be exclusive Menti quiz session tomorrow, 25 odd questions. We can take an overview of the newspaper as well, क्योंकि काफ़ी लोग हर बार डिमांड करते हैं, तो चलो न्यूज़पेपर ओवरव्यू भी कर लेंगे कल। एंड उसके बाद we'll have an exclusive Menti quiz of 25 questions, September and October months. You guys need to prepare them really well. रिविजन करते जाओ आप साथ साथ। अब थोड़ा सा जो है रिविजन गियर अप करने का टाइम आ गया। एंड I'll see you all tomorrow. Before that, I'll see you today at 8 p.m. and then I'll see you again at 10:30 p.m. and then I'll see you again tomorrow at the same time at 3 p.m. Till then, tata, bye bye, take care, keep learning, keep preparing, signing off.